Good morning, students. Welcome again in our political science class of class 11th. We are doing chapter 3, election and representation. And our today's topic is Independent Election Commission. We have discussed some points in our last class, and today we will continue the topic. Constitution ensures the security of the tenure of the CEC, means Chief Election Commissioner, and election commissioners. They are appointed for a 6-year term or continue till the age of 65. For the post of CEC or election commissioner, the term is for 6 years and the age limit is 65 years, whichever is earlier. The CEC can be removed before the expiry of the term by the President if both House of Parliament make such a recommendation with a special majority. This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in elections. So what is the tenure of election commissioner? They are appointed for 6-year term or the age of 65, whichever is earlier. And CEC can be removed before the expiry of the term only by President and if the both houses of Parliament make such a recommendation with a special majority. Here I would like to mention what is special majority. Special majority means 2/3 majority of those present and voting. 2/3 majority in Parliament, present and voting members. So 2/3 majority of present and voting and simple majority of the total membership of the House. Hence, total membership of the House का half plus 1 means if there is 500 members, so 250 plus 1 is the simple majority and 2/3 majority of those present and voting. किसी proposed bill पर जो voting कर रहे हैं और at the time of voting who are present, 2/3 majority उनकी, ये होता है special majority. For example, you have to pass a resolution in your class with a special majority. Imagine that your class has a total student strength of 57, but on the day of voting, only 51 students are present and 50 students participated in voting. So, simple majority of your class will be 29 students and 2/3 majority will be 34 students. So, to pass a bill by special majority, vote should be 2/3 majority. And CEC can be removed by the President if both houses of Parliament make such a recommendation with a special majority. This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in election. और ये प्रोविज़न इसलिए बनाया गया है ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी चीफ इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इसलिए रिमूव न कर दे कि उसने इलेक्शन में उस पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया. द इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड by the President of India. The Election Commission of India has a wide range of function. Now we are going to discuss the function of Election Commission.
It supervises the preparation of up-to-date voters list. It makes every effort to ensure that the voters list is free of error, like non-existence of names of registered voters are or existence of names of those non-eligible or non-existent. So what is the function of election commission? Function of election commission is to prepare a voter list free of error. It also determines the timing of election and prepares the election schedule. The election schedule includes the notification of election, date from which nomination can be filed, last date for filing nominations, last date of scrutiny, last date of withdrawal, date of polling, and date of counting and declaration of result. During this entire process, the Election Commission has the power to take decision to ensure a free and fair poll. It can postpone or cancel the election in the entire country or a specific state or specific constituency on the ground that the atmosphere is vitiated and therefore a free and fair election may not be possible. During entire process, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो फ्री एंड फेयर पोल कराने के लिए किसी भी तरह का डिसीजन ले सकती है. वो चाहे तो किसी पूरी कंट्री में या किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में या स्पेसिफिक एरिया में पोलिंग को कैंसिल भी कर सकती है, उसको पोस्टपोन भी कर सकती है अगर उसको लगता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ऐसा हो रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया जा सकता. द इलेक्शन कमीशन also implements a model code of conduct for parties and candidates. मीन्स पार्टी और कैंडिडेट के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इम्प्लीमेंट कराती है. इट कैन ऑर्डर अ रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी. इट कैन ऑल्सो ऑर्डर अ रीकाउंट ऑफ वोट्स when it feels that the counting process has not been fully fair and just. The Election Commission accords recognition to a political party and allots symbol to each of them. The Election Commission has very limited staff of its own. It conducts the elections with the help of the administrative machinery. However, once the election process has begun, the Commission has control over the administration as far as election-related work is concerned. During the election process, the administrative officers of the state and central government are assigned election-related duty, and in this respect, the Election Commission has full control over them. The Election Commission can transfer the officers or stop their transfers. It can take action against them for failing to act in a non-partisan manner. क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपना खुद का स्टाफ बहुत कम होता है, इसलिए वो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज़ को यूज़ करता है. और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस्ड होता है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज़ जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज़ हैं वो इलेक्शन पर्पस के लिए इलेक्शन कमिश्नर के अंडर हो जाती हैं, अंडर वर्क करती हैं. इलेक्शन प्रोसेस के दौरान स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं और इलेक्शन कमीशन का उन पर पूरा कंट्रोल होता है. उन ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन
या तो ट्रांसफ़र कर सकता है या उनका ट्रांसफ़र अगर किया गया है तो उस ट्रांसफ़र को स्टॉप कर सकता है, और किसी भी ऑफिसर्स के अगेंस्ट वो एक्शन भी ले सकता है अगर उसको लगता है कि फ्री एंड फेयर तरीके से वो ऑफिसर इलेक्शन कराने में असमर्थ हैं। ओवर द years, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its power to ensure fairness in the election process. It has acted in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral process. The record of Election Commission also shows that every improvement in the functioning of institutions does not require legal or constitutional change. It is widely agreed that the Election Commission is more independent and assertive now than it was till 20 years ago. This is not because the powers and constitutional protection of the Election Commission have increased. The Election Commission has started using more effectively the powers it always had in the Constitution. In recent times, Election Commission ज़्यादा इंडिपेंडेंट और असर्टिव हो गई है, जैसे कि 20 साल पहले थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पावर्स को बढ़ाया गया है या फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने उन पावर्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही प्रोवाइडेड हैं उनको अब ज़्यादा अच्छी तरह से मोर इफ़ेक्टिवली यूज़ करना शुरू किया है। Now the topic is electoral reforms. No system of election can ever be perfect. And in actual election process, there are bound to be many flaws and limitations. कोई भी इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, और जब हम इलेक्शन प्रोसेस में उतरते हैं, हम जब उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो बहुत सारे फ्लॉज हमारे सामने, लिमिटेशंस हमारे सामने आते हैं। Any democratic society has to keep searching for mechanisms to make election free and fair to the maximum. With the acceptance of adult suffrage, freedom to contest election, and the establishment of an independent election commission, India has tried to make its election process free and fair. However, the experience of the last 55 years has given rise to many suggestions for reforming our election system. The Election Commission, political parties, various independent groups, and many scholars have come up with the proposals for electoral reform. Some of these suggestions are about changing the constitutional provisions discussed in this चैप्टर। बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात की गई इलेक्शन प्रोसेस में। आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज्ड फ्रॉम द FPTP to some variant of the PR system. This would ensure that parties get seats as far as possible in proportion to the votes they get. मीन्स क्या रिफॉर्म करने की बात की गई कि हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन का वो FPTP सिस्टम ना होकर PR सिस्टम होना चाहिए, जिससे पार्टीज़ को उनके वोटिंग परसेंटेज के अनुसार सीट्स मिल सकें। द सेकंड रिफॉर्म विच इज सजेस्टेड इज देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविज़न टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वुमेन आर इलेक्टेड to the parliament and assemblies. Third, there should be stricter provision to control the role of money in election politics. The election expenses should be paid by government out of a special fund. Next,
Candidates with any criminal case should be barred from contesting election even if their appeal is pending before a court. Next, there should be complete ban on the use of caste and religious appeal in the campaign. Next, there should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in a transparent and democratic manner. These are a few suggestions. There is no consensus about these suggestions. ये suggestions कुछ political parties और कुछ institutions की तरफ से दिए गए, लेकिन इनमें consensus नहीं है, इनमें सहमति सबकी नहीं है. Even if there was a consensus, there are limits to what the laws and formal provisions can do. और अगर किसी प्रोविज़न में कंसेंसस है भी तो वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं कि लॉ या फिर फॉर्मल प्रोविजंस को लेके कुछ लिमिटेशंस हैं. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड ओनली इफ द कैंडिडेट्स, द पार्टीज एंड दोज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस एग्री टू अबाइड बाय द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन. जो भी इस इलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूडेड हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, कंटेस्टेंट और जो ऑफिशियल्स हैं जो इसमें इसको होल्ड करा रहे हैं, अगर वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट से अगर काम करते हैं तो वैसे भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स, देयर आर 2 other ways to ensuring that elections reflect the expectations and democratic aspirations of the people. लीगल रिफॉर्म्स के अलावा भी 2 ऐसे तरीके हैं जो कि इंश्योर करते हैं डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस को. One is, of course, that people themselves have to be more vigilant. हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, ये तब भी हो सकता है कि अगर जो वोटर्स हैं, जो पीपल हैं, वो ज़्यादा विजिलेंट हों, मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हों. बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन engage in politics on a regular basis. Therefore, it is necessary that various political institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning as watchdog for ensuring free and fair election. लेकिन क्योंकि ordinary people politics में regular basis पे engage नहीं हो सकते, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने पर अपनी नज़र रखें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. गो थ्रू योर बुक. And if there is any query, if there is any doubt, you can ask me. Thank you and have a nice day.